Hi guys, my name is Priyanshu and you are watching Encyclo Hub. अब इस वीडियो में बात करने वाले हैं 6B क्वेश्चन मैथमेटिक्स असाइनमेंट ऑफ सीनियर सेकेंडरी एंड नाउ द क्वेश्चन इज air quality index. Government organizations have created a parameter called air quality index to show the public how polluted the air is now or expected to get in the future. The AQI increases along with the air pollution levels and the corresponding public health sector. Poor air quality generally impacts children, the elderly, and blah blah blah. And here are the five questions are here. What is the range of the data? Calculate the mean based on the mean AQI levels over the years. Find the variance in the standard deviation and which city A or B shows greater variability in AQI levels. So this is the question of six this mathematics assignment. अगर आपको ये आंसर चाहिए तो आप मुझे इस दिए गए नंबर पर मैसेज कर सकते हैं और बता सकते हैं। अगर आपको अतिरिक्त इसके अलावा भी अगर कोई डाउट्स हैं तो वो भी बता सकते हैं आप मैसेज करके। हम जो है सभी तरह के मैसेज को हम सॉल्व करते हैं और अगर हमारे पास सॉल्यूशन है तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक्स के साथ और तब तक के लिए अलविदा।